Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie Sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for updating me with you forever. And now we are going to discuss about the energy band theory. So let me discuss here some. These are the elemental semiconductor. Elemental semiconductors are known as germanium and silicon. These are the elemental semiconductor. And now compound semiconductor in it. First of all, inorganic semiconductor, just like this. Gallium arsenide and CdSe, indium phosphide. These are the inorganic semiconductors, and according to this, like organic semiconductor, these are the anthracene and thylocyanine. These are the organic semiconductor, and in this way organic polymers, so these are the polypyrrole, polyaniline, okay, and also polythiophene. So in this way, elemental semiconductors are germanium and silicon. Compound semiconductor splits into this inorganic semiconductor, organic semiconductor, and organic polymers. So organic semiconductor like this, inorganic, and organic semiconductor anthracene and thylocyanine, and organic polymers are polypyrrole, polyaniline, and polythiophene. So these are the examples of compound semiconductor. And now we are going to discuss about the energy band theory. So energy band theory. So in here we will discuss about the conductors, semiconductor, and insulators. Why they called conductor, why they known as semiconductor. So all these theory will discuss in the energy band theory. So you know that for any isolated atom, कोई भी आइसोलेटेड एटम है, इसकी एनर्जी, द एनर्जी डिपेंड अपॉन द ऑर्बिट on which electron revolve. Okay? यानी कोई भी आइसोलेटेड एटम है, उसकी एनर्जी जो होगी वो उस ऑर्बिट या ऑर्बिट के रेडियस पर डिपेंड करेगी जहां पर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा. ठीक है. सो अब हमने क्या किया कि ऐसे ही एटम हमने ये थे जो आइसोलेटेड एटम थे. These are the electrons like this in their cells. Okay. So whenever these atoms come to closure, when these atom comes to closure and form a solid. अब ये क्या है कि ये एटम जैसे एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएं, या ऐसे हैं कि ये जैसे इसमें ये सेल है, ये इस तरीके से है. तो इनकी आउटर मोस्ट सेल, जब ये एटम बहुत क्लोजर आ जाएंगे, और कितना क्लोजर आ जाएंगे, अप्रॉक्स 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, इतना क्लोजर आ जाएंगे, तो ये एक सॉलिड क्रिएट करेंगे. इन दिस प्रोसेस
their outermost shell surmounted with each other like this, यानी इनकी जो outermost shell है वो एक दूसरे को ऐसे ढक लेंगी, सरमाउंट कर लेंगी, ओवरलैप कर जाएंगी. क्लियर? देन इन हियर दिस इज द सॉलिड, दिस इज अ सॉलिड. तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मोशन का जो नेचर होगा वो आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन की नेचर, एनी मोशन की जो नेचर होगी उससे क्या होगा? डिफरेंट होगा. सो राइट डाउन, फॉर एनी आइसोलेटेड एटम द एनर्जी डिपेंड अपॉन द ऑर्बिट in which the electron is revolving. Okay, so like this is the atom and these are the electrons in outer motion. So whenever these atom comes too closer, approx 2 to 3 angstrom length, too closer, then their outermost shells surmounted with each other and their electron also be participate with each other. Okay, so अगर ये बहुत पास आ जाएंगे तो इनकी आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, या आउटर मोस्ट सेल एक दूसरे को क्या कर लग जाएंगी? ओवरलैप करने लगेंगे. देन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ दिस एटम ओवरलैप्ड विद ईच अदर देन फॉर्म अ न्यू सॉलिड. सो वी कैन से दैट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the nature of electron in the solid, the nature of motion of electron in solid is different from the nature of an isolated आइसोलेटेड एटम. ठीक है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की नेचर होगी, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस सॉलिड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड एटम. सो सिंपली वी कैन से दैट इन द सॉलिड क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन हैज द यूनिक पोजीशन. ओके, so that electron has an unique position inside the crystal. Any inside the crystal or solid crystal, any solid crystal के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी यूनिक पोजीशन पे होता है. where the charge pattern around any two electrons will be differed. चार्ज पैटर्न जो होगा किस कोई भी टू इलेक्ट्रॉन्स का, उसके सराउंडिंग वो डिफरेंट होगा. ड्यू टू दिस their energy level also be different. Due to this the energy level also be different and form energy band. Okay, so simply now we can say that the electron has the unique position inside the solid crystal or inside the crystal where the charge pattern of any two electrons is different. Due to this the energy pattern or energy level also be different. Due to this here formed some energy band, and these energy band are two types: valence band that is VB and conduction band that is CB. So this region a valence band which contains all the electrons, and this is known as the valence band, and the above layer of the valence band which is completely empty or there is no any electron, that is known as the conduction band. So energy band breaks into two types of band: valence band and conduction band. Valence band is that region of energy level where all the electrons
available, and conduction band is that region where no any electron. It means this is an empty region and it lies above from the valence band. So in this way we have formed two region, valence band and conduction band. So here these are the CB and this is the VB. Okay, this region is valence band and this region is conduction band. So according to this, for conductors, insulators and semiconductors, what will happen? So this is the valence band. So for conductors, this is the VB and this is CB. So whenever valence band and conduction band overlap with each other, then here this is the CB and this is VB. Means वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाएंगे, वैलेंस बैंड ऊपर आ जाएगा, कंडक्शन बैंड नीचे आ जाएगा. इट मीन्स हियर नो एनर्जी गैप, मीन्स Eg equals to 0 for the conduction or for the conductor. There is no energy gap. So whenever they overlap, so electron mostly electron ejected from valence band to conduction band due to this reason, because here energy gap is 0 whenever valence band and conduction band overlap with each other. जब valence band और conduction band एक दूसरे को overlap करते हैं तो इनके बीच में कोई energy gap नहीं रहता. इसका मतलब जो सारे इलेक्ट्रॉन valence band में थे वो completely transmit हो सकते हैं, maximum order में valence band to conduction band जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर energy gap 0 होता है. और इसके एग्जाम्पल होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. नेक्स्ट आते हैं इंसुलेटर पे. इंसुलेटर पर ये होता है CB and this is the VB and here the energy gap is greater than 3 electron volt, and due to this here no any electron transmitted from VB to CB, no electron emit from VB to CB. and example इसके हैं प्लास्टिक, wood, rubber, etc. So these are the insulators, and same way you can also say that semiconductors. So in here this is the energy level like CB and VB. So here the energy gap less than 3 electron volt. Due to this some electrons ejected from VB to CB. यानी यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है और इस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन VB to CB ट्रांसमिट हो जाते हैं. एग्जाम्पल है इसके जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. ओके, सो अगर हम इसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करना होता है तब हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराते हैं. सो दीज आर द कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड द सेमीकंडक्टर्स. ओके.